Hello everyone, welcome to you all to this channel Gyandut 2.0 initiated by College Education Jaipur, Rajasthan. And I am Reena, Assistant Professor, Department of English. And the topic of our today's e-lecture is the story Grief. This story is written by Anton Chekhov. Anton Pavlovich Chekhov. Dear student, this is a well-known name in the field of short stories, and this story is in also our syllabus in BA part first, paper second in prose and fiction. And now we are also studying our story segment. And as previously we have discussed two stories, and first we read the story The Three Dancing Goat, and after that we have discussed The Fortune Teller, and this is our third story. And the name of the story is Grief, written by Anton Chekhov. So, start our today's lecture with the introduction of the author Anton Chekhov. Chekhov is remembered as a playwright and one of the masters of the modern short story. And the full name of Anton Chekhov is Anton Pavlovich Chekhov, and the lifespan of him 1860 to 1904. He is eminent Russian playwright and master of the short story. So, this is the writer of our today's story. The story is Grief and the writer is Anton Chekhov. And he was born on 29th January 1860 in Tangerang, Russia, and he was died on 50th July 1904. Anton Chekhov was a Russian short story writer, playwright and physician. As he spent a wretched childhood. He spent a wretched childhood. The harsh experiences he underwent during his formative years made him state sorrowfully. And as Anton Chekhov himself says that there was no childhood in my childhood. ये खुद कहते हैं एंटन चेकव देयर वॉज नो चाइल्डहुड इन माई चाइल्डहुड बिकॉज इन्होंने बहुत ही रेचेड लाइफ जो है वो जी है. इनका बचपन बहुत ही दुखमय निकला. एंड ऑल्दो ही अर्न अ डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैस्को इन 1884, और इन्होंने मेडिकल फील्ड ऑफ मेडिकल में भी इन्होंने जो डिग्री लिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैस्को से. एंड ही डिवोटेड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन राइटिंग, and his early tales, skits, and articles were written mainly for humor magazines. But he soon turned to serious writing. And in his student days, he had contracted tuberculosis, and this afflictions added intensity to his consciousness of the areas of physical suffering and mental isolation in the life around him. And his writings soon become concrete and enriched by the power of minute observation of the savviness of life. Means he had a disease of tuberculosis, and so which he could live only for a few years. And he emerged finally as a moody, unhappy painter of futility and despair, because he has spent a wretched life. So, and he has faced a serious disease like tuberculosis. So he is emerged as a moody and unhappy painter of futility and despair. And nevertheless, he retained to some extent and his wit and good sense. And Anton Chekhov was the inspiration to all. जो शॉर्ट स्टोरी फील्ड ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में एंटन चेखव जो है उनका नाम
ऑल ओवर दी वर्ल्ड लिया जाता है और कई सारे जो राइटर्स हैं उनके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने एंटन चेकअप एंड ही वाज द ग्रेट रशियन राइटर. He was a Russian short story writer and playwright and physician also. So these are the most famous four pieces of Anton Chekhov. These are the plays written by Anton Chekhov, and the masterpieces are The Seagull, Uncle Vanya, and The Three Sisters and Cherry Orchard. ये चारों जो प्ले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट और एक मास्टरपीस इनको कह सकते हैं. सो दीज आर दी फोर मास्टरपीस प्लेज ऑफ एंटन चेखव. कई बार हमें यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसमें ये भी पूछा जा सकता है, नेम द टू ग्रेट प्लेज ऑफ एंटन चेखव. देन यू कैन राइट as follows, like the four masterpiece plays of the Anton Chekhov are The Seagull, Uncle Vanya, The Three Sisters, and The Cherry Orchard. So this is the introduction of Anton Chekhov, dear students. And as we know that our today's story is grief. What is grief? Grief is an extreme misery. ग्रीफ मीन्स बहुत ज्यादा जो पेनफुल, बहुत ज्यादा जो एक एक्सट्रीम सोरो, एक्सट्रीम मिजरी वाला जो कंडीशन होता है वो होता है ग्रीफ. सो थीम ऑफ दिस स्टोरी वी कैन से दैट द थीम ऑफ द मिजरी इज द carelessness of man and his willingness to share the grief of others. मीन्स कोई भी आदमी जब बहुत ज्यादा when he is facing extreme grief, then he wants to tell his grief to somebody else. And here is the irony of this actual world, that we cannot find a single person who can patiently and attentively listen our grief, and we cannot find a single person to which we can express our grief. So this is also the story, and dear student, our today's story grief is also revolves around this theme, grief, and how the main figure of this story is Iona. किस तरीके से जो इयोना पोटापो नाम के जो कैब ड्राइवर हैं यहाँ पे, वो कैब ड्राइवर कैसे अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और उनको कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलता जिसे वो अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस कर सके. उनका ग्रीफ क्या था? जो कैब ड्राइवर है इयोनो, उसका ग्रीफ ये है कि रिसेंटली उसका बेटा एक्सपायर हुआ है, उसके बेटे की डेथ हुई है, and he just want to express his grief to somebody else, but he did not find any single listener to whom he can express his extreme grief, his grief about the death of his son recently, just a week ago. He has lost his son and he cannot find any patient listener to whom he can express his grief, he can express his pain related to the death of his son. So this is our today's story, the grief. And Anton Chekhov was a great artist to portray the feeling of the person. So इयोनो पोटापो नाम का इसमें एक केब ड्राइवर है जो इस स्टोरी का मेन फिगर है, ग्रीफ स्ट्राइकन फिगर है, और कैसे वो अपने ग्रीफ को बताता है सबको और किस तरीके से जो है उसके ग्रीफ को सुनने वाला वहां पे कोई नहीं होता है. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज स्टोरी, डियर स्टूडेंट्स. एंड बिफोर वी बिगिन अवर स्टोरी, we need to discuss here what type of questions we are asked in our university exams. So we can ask like that: how does the writer describe his sense of sorrow at the man's inhumanity and his compassion?
and for the lonely and the downtrodden. And next question may be like this, that describe how Iono. Next question we can see like this, describe how Iono tries to talk about his pain to the others, and how much do you think is sharing of one's painful thoughts are important. And we can also ask like this question, that how was Iono's grief relieved in the story. And people are not very friendly and kind in the big cities. And state your views on the subject. Or we can also ask like this, describe every little details of Iona's grief. So these are the major questions most probably asked to our university exams also. So let's start our today's story. And the story of our today's e-lecture is grief, and the summary and the story of this um, uh, our today's story, grief, is revolves around a Russian cab driver whose name was Iono Potapo. And name of the Russian cab driver is Iono Potapo, and he has lost his only son after a just a week ago. And he was deeply grief stricken figure here, and he wants somebody to express his grief. So he was waiting for some passenger at the cab station. वो कैब स्टेशन पर है, योनो पोटापो नाम का रशियन कैब ड्राइवर है, और वो पैसेंजर्स का इंतजार कर रहा है कि कोई तो ऐसा पैसेंजर मिलेगा जो किसी न किसी तरह से मेरे ग्रीफ को सुन सकेगा, और मैं अपना ग्रीफ कह के थोड़ा सा रिलीफ महसूस करूंगा. सो वो इंतजार कर रहा है, और देखते हैं कि कैसे वन बाय वन पैसेंजर्स आते हैं, और किस तरीके के पैसेंजर आते हैं जो जिनके पास इयोनो का ग्रीफ सुनने तक का टाइम नहीं होता है. इवन वो उसको बहुत ज्यादा अपशब्द सुनाते हैं कि जल्दी चलो, हमें जल्दी पहुंचना है, और तुम क्या अपना वो दुखड़ा लेकर के बैठ गए हो. सो इस तरीके से इयोनो इतना ज्यादा तकलीफ में हो जाता है कि लोगों के पास किसी का दुख सुनने का भी टाइम नहीं है. सो the outline of the story is, the story entitled Grief is written by Anton Pavlovich Chekhov, and he is a Russian story writer. And in this story, the writer describes his sorrow at man's inhumanity to man. कि एक आदमी की दूसरे आदमी के प्रति कितनी इनह्यूमैनिटी है. कोई सिंपैथी दर्शाता नहीं है, चाहे सामने वाला कितने ही दुख में क्यों न हो. And we also see in this story the writer's compassion for the lonely and downtrodden and the poor. And this story also conveys to us a message that people are not very kind and friendly into big cities to the grief suffering poor people. इस स्टोरी में हमें राइटर का झुकाव है, जो एक ग्रीफ स्ट्राइकन डाउन ट्रोडन और जो लोनली पीपल है उनकी तरफ राइटर का किस प्रकार से एक झुकाव है वो देखने को मिलता है. और हमें ये भी इस कहानी में देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो बिग सिटीज है उनमें लोगों के पास किसी के भी ग्रीफ को सुनने का कोई टाइम ही नहीं है. सो इन बिग सिटीज ये राइटर यहाँ स्टोरी के माध्यम से कहना चाहता है कि कैसे लोग जो हैं वो केयरलेसनेस उनमें दिखती है, और जो बिग सिटीज के जो रिच कास्ट के पीपल हैं वो लोनली और डाउन ट्रोडन जो लोग हैं उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता. And one's grief to the others, and the writer can lighten his heart, and one can forget his grief when he hears some words of sympathy and kindness from the others. यानी हम किसी से सिंपैथी और काइंडनेस के दो शब्द भी सुन लेते हैं तो हमारा सारा दुख भूल जाते हैं. बट हेयर इयोना डज नॉट फाइंड एनी सिंगल
a listener who can utter a single word of sympathy towards the Iona. So this is the story towards the carelessness of human being to a man, even to a man. But there is no person in the big cities who can pay his attention towards the grief of poor and downtrodden. Here, Iono Potapo, the grief-stricken figure in this story. And in this story, we see the grief-stricken figure, and this is Iona Potapo. He is the grief-stricken figure in this story. So this is the analysis of our today's story, Grief, one by one. Here, we will discuss this story. And first of all, at the beginning of the story, we can see the Iono Potapo as a grief-stricken figure. And in this story, the story is connected with the Iono Potapo, a poor lonely cab driver, and his son, namely Berin, has recently passed away. And so he is very grief-stricken here. And he wants to express his painful event to someone, but no one in the town pays any attention to his grief, and even nobody is ready to listen to the details of his grief and which he wants to express. At the end of the story, he expresses his grief to his host because no one can ready to hear his grief. सो योना पोटापो यहाँ ग्रीफ स्ट्राइकन फिगर है जिसका एक एकमात्र बेटा बेरिन रिसेंटली डाइड हुआ है और वो किसी न किसी को अपना दुख सुनाना चाहता है बट वो एक भी सिंगल ऐसा लिसनर यहाँ नहीं खोज पाता जिसको कि वो अपना दुख दर्द सुना सके और एट लास्ट वो अपने जो होर्स है उसको ही वो अपना दुख सुनाता है सो let's one by one discuss our story. Today's story here is the sympathy and compassion of the writer towards poor and lonely and the downtrodden. इस स्टोरी में हमें राइटर तो पुअर और डाउनट्रोडन की तरफ राइटर की सिंपैथी और कंपैशन हमें देखने को मिलता है और देखते हैं कि कैसे जो है राइटर एक पुअर और डाउनट्रोडन की तरफ अपना सिंपैथी और कंपैशन रखता है सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी In this story, the sympathy and compassion for the lonely and downtrodden is quite visible in the story. And the writer has sympathy and compassion towards the Iona because of his son's death and of his poverty. इयोना पोटापो जो है ग्रीफ स्ट्राइकन है उसके बेटे की डेथ हुई है और वो पुअर भी है सो यहाँ हम राइटर का सिंपैथी और कंपैशन जो है वो इयोना की तरफ देखने को हमें मिलता है एंड द राइटर हैज सिंपैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स इयोना इयोनो was not able to get enough money for himself and his horse and the writer wants to say that how human beings in a big city and town became inhuman, indifferent, and cold towards the grief of poor and the lonely person, like Iono in this story. And in big cities, the people do not have time to stand and stare, even do not have time to stand and hear the grief of melancholy and sad people. And they do not have any kind of sympathy and kindness for the poor people. And they always ready to get advantage from such poor people. बिग सिटीज में जो लोग हैं वो कैसे इंडिफरेंट होते हैं पुअर और लोनली पीपल की तरफ इवन दे आर always ready to get advantages from these poor and lonely people but they do not want to utter a single word of sympathy towards these poor and lonely people ये हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा कि कैसे जो है योना कैब ड्राइवर है उसके घोड़ा गाड़ी में जो कैब में वन बाय वन पैसेंजर्स आते हैं और किस तरीके से वो एक कैलसनेस दिखाते हैं इनह्यूमैनिटी दिखाते हैं
योना की तरफ वो इस तरह से, एंड द फर्स्ट पैसेंजर ऑफ योना इज एन ऑफिसर। जो योना के कैब का फर्स्ट पैसेंजर है वो एक ऑफिसर है, एंड हु हायर हिज कैब फॉर विबोरी वे। विवोरी वे तक जाने के लिए वो पहला पैसेंजर जो ऑफिसर है वो उसके कैब को हायर करता है। एंड ऑन द वे योना टेल्स हिम, जो ऑफिसर है पैसेंजर उसको योना बताते हैं अबाउट द डेथ ऑफ हिज सन, अपने सन की डेथ के बारे में बताता है। बट द ऑफिसर डज नॉट शो एनी सिंपैथी टू योना, वो योनो की तरफ कोई सिंपैथी नहीं बताता है। इवन वो उसको कर्ज ही करता रहता है कि अच्छे से गाड़ी ड्राइव करो, कितनी देर में मुझे पहुंचाओगे। ही did not take any interest to hear the grief of Yono, and he only inquires about his son's death instead of giving sympathy to the Yona. And he tells him, give a speed to his carriage so that he can reach early on his place. And this show that anyone does not pay attention towards lonely and poor people in the big cities and towns. And after the officer, the three passengers hire the carriage of Iona, such as जो ऑफिसर है उसके बाद में तीन और पैसेंजर उसके कैब को हायर करते हैं, और तीनों यंग मैन में टू टॉल एंड लैंकी फेलो एंड वन इज लिटिल हम्पबैक्ड। और तीनों पैसेंजर में दो कैसे हैं, वो टॉल एंड लैंकी हैं, एंड जो थर्ड पैसेंजर है वो थोड़ा हम्पबैक है, एक कुबड़ा। हम्पबैक मीन्स जिसको पीछे से बैक निकला हुआ होता है, कुबड़ा जिसको हम कह सकते हैं। तो एक हॉन्च बैक यंग मैन और टू लैंकी टाल एंड लैंकी फेलो, ऐसे तीन पैसेंजर वापस उसके कैरिज को हायर करते हैं। एंड दे हायर योनोस कैरिज फॉर पुलिस ब्रिज तक जाने के लिए वो हायर करते हैं। एंड ऑन द वे योना reveals them that his son Berin died this week, and Yona gets surprising reply from the passenger. Humpbacked passenger gives the reply that we must all die. जो हम्पबैक पैसेंजर है थर्ड, वो जब योना अपने बेटे की डेथ का जो दुख उनको बताता है, तो उन तीनों में से एक जो हम्पबैक है वो क्या बोलता है, वी मस्ट ऑल डाई, हम सबको मरना है। क्या हुआ तुम्हारा बेटा है, कोई नया थोड़ी मरा है। सो he did not utter a single word of sympathy towards the Iono. Instead of it, he rebukes Iono to on the slow driving, and the humpbacked continue cursing and abusing him and his horse. Means एक सिंपैथी का एक शब्द कहने के बजाय वो कंटिन्यू योनो को और उसके हॉर्स को कर्ज करता रहा बैठा बैठा। हिम एंड हिज हॉर्स, एंड योनो थिंक्स that they are jolly city gentlemen and they are indifferent to the sufferings of the other. और ये सोच के योनो बिल्कुल शांति से बैठ जाता है। एंड एक्सट्रीम ग्रीफ ऑफ योना, एंड जब उसके सारे पैसेंजर्स भी चले जाते हैं और कोई उसके ग्रीफ को सुनने को रेडी नहीं होता है, देन हियर योनो फाइंड्स अ पर्सन विद एक्सट्रीम ग्रीफ। ऐसा लगता है मानो अर्थ फ्लडेड ग्रीफ ऑफ योनो। योनो का एक अर्थ फ्लडेड ग्रीफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि अगर वो अपना ग्रीफ किसी को नहीं बताएगा, देन he cannot get any relief, उसको किसी तरह का कोई आराम नहीं मिलेगा। So he tries to find a single listener, और उनके पैसेंजर्स के चले जाने के बाद भी योनो points out that his grief is so great, so tremendous, and if Yono is not expressed his grief, it may suddenly break the heart and whole earth can be flooded in his grief. So अर्थ फ्लडेड ग्रीफ जो है वो योनो के हार्ट में वहां भरा हुआ है, एंड ही वॉज टू मच ग्रीफ स्ट्राइकन, सो इट इज नेसेसरी दैट वन मस्ट टॉक हिज पेनफुल इवेंट टू समवन,
and one must reveal his grief to the others, and it lightens his heart. But Iono finds not only a person who can be in mood to listen Iono's grief, and he watches the crowd of people and he searches around the crowd someone who will listen his grief, and at last he finds a पोटर. वो वापस वहां चला जाता है स्टेशन पर, और वहां एक पोर्टर है, वो सोया हुआ है. वो सोचता है कि इसको मैं अपना दुख सुनाऊंगा, बट who has covered himself with a sake, but he too does not want to talk him. जो पोर्टर है वो भी उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, and the porter tells him to move from here, and Iona realizes completely that he is that it is useless to turn to the people for the help. और जब वो पॉटर को उठा करके बोलता है कि सुनो भाई, मेरा जो है बेटा रिसेंटली एक्सपायर हो गया है और मुझे किस तरह से दुख हो रहा है, तो वो पोर्टर भी मना कर देता है. नो, आई डोंट वांट टू लिसन योर स्टोरी, आई जस्ट वांट टू गेटिंग सम रेस्ट. वो क्या कहता है कि मैं तो आराम करना चाहता हूँ. और वो वापस से उसको इयोनो को बहुत ज्यादा ग्रीफ स्ट्राइकन होता है कि इवन जो मेरे पैसेंजर थे जो रिच क्लास थे वो भी मुझे सुनने को तैयार नहीं है, और ये जो पुअर मेरे जैसे ही लोग हैं ये भी मुझे सुनने को तैयार नहीं है. एंड देन वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वहां वो एक यंग कैब ड्राइवर को देखता है. एंड आफ्टर द पोर्टर he saw young cab driver simply covers himself and sinks into the deep sleep, and Iona becomes more disheartened. और फिर वो एक और जो यंग कैब ड्राइवर है पास ही सोया हुआ है उसको और देखता है और उससे अपना दुख सुनाने की कोशिश करता है, तो वो भी सुनने को तैयार नहीं है और वापस अपने एक्सट्रीम जो स्लीप ले रहा है, वो जो वापस अपने नींद में डूब जाता है, सिंक्स इनटू डीप स्लीप. और इस प्रकार से जो योना है वो बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड हो जाते हैं. फाइनली ही during the whole day, he did not find a single person to whom he can express his extreme grief. He can express the grief of his son's death so that he can get some relief. But he did not find a single person. And at last, what will happen? Do you guess? Okay, just discuss what is going to the next in this story. And at the end of this story, we find Iono expressing his grief to his horse, and thus he reveals his grief to the horse and lightens his heart from the grief of his son's death. And at last, he tells his story of his grief, the death of his son. He tells his grief to his horse, and his horse calmly listens the whole story of Iona. He patiently listened the grief of Iona, and so by this Iona get relief. He feel just lighten his heart, because जब हम हमारा ग्रीफ किसी को कह देते हैं तो स्वयं को बहुत ज्यादा एक लाइटन, जैसे कि हमारा मन हल्का हो गया है, इतना लाइटन हम फील करते हैं. सो सेम हेयर विद इयोना. इयोनो जब अपना ग्रीफ अपने हॉर्स को सुना देता है तो वो एक तरीके से अपने आप में बहुत लाइट हार्टेड फील करता है. एंड द हॉर्स लिसन टू हिम carefully and patiently, and it looks as if he has a great sympathy with grief of his master. और बिल्कुल पेशेंटली कामली जो हॉर्स है वो अपने मास्टर का ग्रीफ सुनता रहता है. सो when a horse, an animal
can hear the grief calmly, why not a man? This is the big question in this story. Then, when an animal can hear somebody's grief so patiently, then why not a man? क्या आदमी जब जानवर एक हॉर्स किसी के ग्रीफ को इतना पेशेंटली सुन सकता है, बिल्कुल इयोना के हाथ पे वो अपना मुंह रख के और बहुत पेशेंटली अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए, जैसे कि वो एक इयोनो को अपनी सिंपैथी दिखा रहा हो, बिल्कुल ऐसे उसके ग्रीफ को सुनता है। तो जब एक एनिमल इतना कामली, इतना पेशेंटली हमारे ग्रीफ को सुन सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, एंड ही जस्ट able to show his sympathy also, then why not a man? क्यों कोई आदमी ऐसा क्यों नहीं कर सकता? Why not a man? Here is the irony of mankind, and thus we can say that the story is very didactic. Here we can say that the story is very didactic. How it is didactic? Because the message of this story is that we should be kind to the grief of the others, and we should have sympathy for the others in our hearts. So, this is all about today's story, Grief, dear student. And I think all of you understood this story and take delight as well. ये स्टोरी आप सबको अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ भी आ गई होगी। सो हमने देखा कि किस तरीके से इयोनो ग्रीफ स्ट्राइकन फिगर है इस स्टोरी में, एक रशियन कैब ड्राइवर है, और एट लास्ट वो कैसे किसी को भी अपना दुख नहीं सुना पाता और सिर्फ अपने हॉर्स को ही वो आखिरी में अपना दुख सुनाता है. So this is our today's story, and I hope all of you enjoyed this story very much. Thanks to you all being with us on this channel, Gyandu. Please subscribe more and more this channel and get benefited from this channel, Gyandu 2.0, initiated by College Education. And really, it's a very wonderful channel, much informative channel for all of you dear students. Thanks to you all, and be with me our next and upcoming videos.